Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaha. Namah Shivaya. Shambho Shankara Namah Shivaya. Girija Shankara Namah Shivaya. Shambho Shankara Namah Shivaya. Girija Shankara Namah Shivaya. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Wonderful. Seeing awareness in the form of Shiva, seeing awareness in the form of Shakti, seeing awareness in the form of, in all forms. That is the sadhana. In all forms, in all shapes, in all people, in all things, in all objects, in all experiences, in everything. The same, the same, the same. And we become more and more intimate with this central idea. जो ये central idea है उसके साथ हम वाकिफ हो जाए पूरी तरह से. और central idea यही है कि सभी कुछ, सभी का स्रोत जो है एक ही है. The source is the same of all experiences, of all people. Even though we see a million colors, a million forms, and trillions of stars and billions of different people with different opinions, different colors, different shapes, and yet all made up of consciousness, made up of awareness, made up of the knowing through which they are known. I was reading something about focusing. हम फोकसिंग के बारे में, मतलब हर जगह हम बच्चों को कहते हैं, स्कूल में हमने सुना है फोकस फोकस, लर्न टू फोकस, यू मस्ट फोकस. टीचर कहती है स्कूल में, पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को घर में, एंड इवन आवर फ्रेंड्स विल टेल व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू फोकस फोकस फोकस. But nobody, nowhere teaches us how to focus. No school subject is there how to focus.
They will teach you how to do this experiment, how to dissect a frog, or how to analyze an equation. And to do all of that, any of that, you need to focus. But nobody says how to focus. You are just expected to focus. You're just expected to know already how to focus. But nobody says how to do it. कैसे focus करना है? What is the way to focus? Nobody talks about that. And then kids developed, ये आजकल तो fancy नाम है, ADHD, ADD. Um, I don't know. Do you see any of that in India with the kids? US में तो it's so rampant. I don't know. Purushottam ji is a pediatrician, so I'm asking him. Attention deficit and hyperactivity disorder. Uh, Definitely. मिल रहा है आजकल आपको बच्चों में? काफी Parents come, बड़े parents come to you and say this kid is not focusing in school. कहीं किसी जगह पे ध्यान नहीं रहता है, या फिर ध्यान लग जाता है तो ऐसा लगता है वो वीडियो गेम में कि वो आजू बाजू का कुछ पता ही नहीं उसको आसपास. या पहले तो ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट का और पेडियाट्रिशियन का कंसर्न था, अभी या स्कूल्स का भी कंसर्न हो गया है. स्कूल्स का भी कंसर्न हो गया है. सही है. Correct. So it's coming in India also. One of our imports from the West. We never heard about all this in India before. Maybe it was there and it wasn't recognized. I don't know. But my sense is that, well, it's all a matter of awareness, I guess. But in the West, it's been around for a long time. At least for 20 years, people have been aware of this and seeing it in kids कि या तो किसी एक जगह पे ध्यान ही नहीं टिकता है, या फिर एक चीज में जो घुस जाता है तो फिर बाहर निकालना मुश्किल है और कुछ पता ही नहीं. तो इनफैक्ट सो my daughter Supriya, she's a psychologist, a PhD in psychology, and she's going to be conducting a seminar on ADHD and marriage. क्योंकि ADHD is not just a childhood phenomenon, even adults suffer from ADHD. And when one of the partners in a marriage suffers from ADHD, then it's has an impact on the relationship because the person is not available as much as they need to be. तो उसका क्या आघात प्रत्याघात जो भी है वो उसके बारे में वो सेमिनार देने वाली है on the 14th. And I don't know if it's open to public. It's a webinar, but if it is, then I will post the link on Open Door and we can all participate. So ADHD and marriage. But so I had a long chat with her so on this very topic, because on the subject she's dealing with, which is behavioral psychology, how people want to be happy, people want to be balanced, people want to be joyful, creative, contributing, and she approaches it from the science of psychology, study of the mind. And of course I approach it from a slightly different path, which is the study of the awareness in which the mind is part of the awareness. But the goal is the same. Whatever she's trying to do, alleviate suffering, reduce stress, create more joy, create happiness. So the goals of spirituality and the goals of psychotherapy are the same. The purpose of both is to create more and more joyful, balanced people, individuals, children, youth. So ADHD jo hai, so what she was telling me was, first of all, that name itself is probably incorrect. It's not attention deficit. Deficit sounds like a deficiency, that the person doesn't have attention.
the capability to have attention, वो नहीं है, वैसा ये नाम रखा गया है. It's more an attention regulation problem, where the attention either jumps, or when it gets fixated, then it doesn't know that, okay, it's time to move on to something else and something else and something else. So it's that regulation of attention. ये regulate ठीक से नहीं हो रहा है, balance नहीं हो रहा है. It's not that, yeah, so it's a distraction, but it is not as if the attention is not there. It is not a deficiency of attention. It's a regulation of attention is not proper. And what I was sharing with her, kind of, she found very interesting, because I said, your entire psychological study studies attention itself and studies the objects of attention. Where does attention go? How does it go? How to make it go somewhere else? How to make it stay where it needs to stay? So it studies attention, the whatever attention is directed at, वहां जाके रुकता है और वो स्टडी करता है, और उसको जाके सिखाने जाते हैं कि कैसे इसको रेगुलेट किया जाए. एंड इट्स इंटरेस्टिंग व्हाट शी सेड इज कि जिनको ये अटेंशन रेगुलेशन और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, वो लोग किसी एक चीज में जुट जाते हैं तो इतने उसमें घुल मिल जाते हैं, मतलब बिल्कुल उसी में रह जाते हैं कि they lose track of time, they lose track of other things that they need to do, and things like that. So I said, it's like being in fact, it sounds a little bit as if what we talk about being in the present moment, being fully engaged with what is going on right now, without any. So what is the difference? In fact, ye jo being in the present moment, fully engaged in the present moment, is sort of the holy grail, or it's like the goal. It is ये एक बहुत it's a एक ये जो स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक जो सफर है, उसमें एक बहुत बड़ा पड़ाव है ये, कि आप you are engaged when you are. In fact, there is a Zen story where somebody asks the very accomplished Zen master ki, what is the secret of your joyousness? What is the secret of your happiness? And he says, when I'm tired, I sleep. When I'm hungry, I eat. So it's so simple. And this is talking about being in the present. कोई बड़ी philosophy, बड़ी बातों की जरूरत नहीं है. और अगर ये कर सकते हैं आप, तो इसके आसपास बहुत सारी चीजों का सम्मेलन, एक कौन सा शब्द, अभी अभी मैं देख रहा था, एक समन्वय समन्वय एक समन्वय होना बहुत जरूरी है बहुत सारी चीजों का. अगर आप when you're hungry you eat, when you're tired you sleep, if that is true, then a lot of other things must also be true. What else must be true is you must be at peace. Otherwise, even if you're tired, you are worrying and you cannot sleep. You're concerned about something. Coherence, very nice word. Absolutely perfect. Coherence. तो ये होने के लिए आपको आपका दिल साफ होना जरूरी है, आपका मन साफ होना जरूरी है. एंड व्हेन यू आर हंग्री यू ईट. दैट मीन्स हंगर आती है, योर फिजिकल बॉडी इज ऑपरेटिंग प्रॉपरली, because to get an appetite is also a gift. And then you can eat. That means you are healthy, you're able to eat, and you're just not worrying about, oh, my weight is more, weight is less, diet करना है या ये करना है, या या आपके पास समृद्धि है कि आप सो सकते हो, आप खा सकते हो. So it implies a lot of things, just this one sentence: when I'm hungry I eat, when I'm tired I sleep. So this is being in the present moment, being in the present moment, living life simply. तो इसमें, और ये ADHD की जो बीमारी है एक तरह की,
उसमें क्या फर्क है? That is what we were trying to understand. Because in both the cases, in ARHD, which I'm renaming ARHD, attention regulation hyperactivity disorder rather than attention deficit. तो ये ARHD जो है उसमें भी जो बच्चे हैं या एडल्ट भी है वो they are completely immersed in that present moment. So what is the difference between the Zen master and the enlightened person who is also fully engaged in whatever is going on, and this person who is also fully engaged in what is going on? फर्क क्या है? What do you think? Yeah, Purushottam. जैन मास्टर का कंट्रोल है उस पे, लेकिन ये डिसऑर्डर से जो ये कर रहा है ना, वो एक चीज में एंगेज है तो वो अपना अटेंशन वहां से नहीं निकाल पाता जब चाहिए तब। जैन मास्टर जब चाहे जो कर सकता है, मतलब उसका ऑल द टाइम ही इज मास्टर। Exactly. Mastery है उस बात पर. That is why he is able to give his attention or her attention to whatever is in front of her. Whereas this person, he is also or she is also mixed in with that moment, but not able to come out at will, not able to move to the next thing that is present, because life is a series of experiences. It is not one experience. अलग अलग बातें होते ही जा रही है. तो आप वहां से निकल के एक और बात पर, उस बात पर, दूसरी बात पर, that person with the ARHD is not able to do that. So that is the big difference. And so there is a mastery over focusing. You can be pinpoint sharp focus on whatever is going on, and in a moment switch that focus to something else, and then something else, and like that. So how can one learn that? That was what I was saying. But the interesting thing about this whole different approach, meditation on one hand and psychotherapy on the other, the approach to attention is different. So while psychotherapy is looking at the quality of attention, the quantity of attention, the object of attention, the obsession of attention, it is all about the attention itself. Meditation, especially the meditation that we are talking about on Open Door, the direct path, that meditation is also about attention. But what is the difference? What is the difference between psychotherapy's study of attention or focus of attention and our study of attention? What is it is a very important and very beautiful difference. What is it? बताइए आप. We are also looking at, when we talk about meditation, close your eyes, there's something we do with attention. What do we do? Mute पे निर्विचार है. निर्विचार Nirvichar is one thing, we also do that, but specifically about attention. Attention को लेकर हम क्या करते हैं? वी आर अवेयर ऑफ What do we अवेयरनेस। do with it? You are getting closer, but not exactly. You're very close. So I will tell you. So what we are looking at, psychotherapy and psychology looks at attention and where it is going, how it is going, how much is going. What we are looking at in meditation is where is attention coming from? ये आया कहाँ से? ये आ कहाँ रहा है? कहाँ से रहा है? What is the source of attention? There's the source of attention, there's the object of attention. And we can, so ये जो attention जो शब्द है वो भी उसका जो विश्लेषण करेंगे तो it comes from the word TEN, tension. Tension is to pull. Tension is to pull or tension. So the tension or the pulling
It is the pulling of the self in a particular direction. मैं जो हूं उसको मैं stretch कर रहा हूं. It comes from stretching, tension, attention. It is taking this self, which is complete in itself, and stretching it in the direction of whatever is in my experience. If I'm speaking or looking at something, my attention is going to that. If I'm looking at an apple, my attention is stretching from to that apple. If I'm listening to you, is stretching from me to the words. If I'm looking, same thing with everything. All our experiences are a stretching of attention from the self towards something. And our mind is always and continuously and habitually only fixed or engaged with the that end of attention. ये attention का जो दूसरा सिरा है उस पर ही हमारा ध्यान रहता है. Meditation is about taking the attention and taking it backwards towards where it came from. ये attention आया कहाँ से? What is the source of attention? What is that space from which attention arises? And we are not concerned with the object. वो खींचा चले जा रहा है और कहाँ जा रहा है क्या फर्क पड़ता है? I want to understand what is it, and if I want to know what it is, then I have to understand where it is coming from. उसकी शुरुआत कहाँ है? And the whole of psychology is about the stretched attention and the object of attention. Without paying any time or energy or effort or attention to where this attention is coming from. So we go the other way. We say withdrawing. It's like वो कछुआ जो होता है, कछुआ के जो पैर होते हैं, वो जब भी कोई कोई कठिनाई आती है तो वो विड्रॉ कर लेता है, वो अपने आप में उसका सर अंदर चला जाता है, चारों पैर अंदर चला जाता है और वो शेल के अंदर विड्रॉ करके बैठ जाता है. And so meditation is that. Meditation is withdrawing attention from all this and going back to where it is starting from. What is the starting point of attention? Uska shrot kya hai? What is the source? And we look there and we stay there. So we are going backwards to it and then we remain there. And then we see, what is it? Where is this attention coming from? So we withdraw like a kachua ki tarah, we withdraw it from the words, the sounds, the thoughts, the feelings, the whatever, all the senses that are taking us out. All the job of senses is to take our attention and stretch it towards something. उसका काम ही ये है. The job of the पंच इंद्रिया जो है, एक्चुअली ज्यादा इंद्रिया है, पंच नहीं है, सिर्फ और भी है, बट द इंद्रियों का काम यही है कि हम ये अटेंशन को यहां से लेकर किसी बाहर की चीज की तरफ ले जाए. So to understand attention we must go back. So we go back to it and we withdraw all of that and look and fall back, rewind and look, where is this coming from? And we just see, what is that space like? It is the self, it is the I, because it is always I am hungry, I am looking at this, I am seeing this, I am hearing this, I am feeling this. So जो I am के बाद का जो शब्द है उसी पर हमारा ध्यान है. हम अभी इसको वापस लेके जो I है, जिसको ये सब हो रहा है, उसकी तरफ वापस आ रहे हैं. So, and then we examine, what is that attention, what is this attention? And if you understand that and become a master of this, where the source is, then understanding it when it goes out will become much easier, and regulating that will become, you become a master of this attention, and you're able to completely give yourself to whatever is in front of you, because you've understood who you are,
or what you are from this attention is coming. And that nothingness or everythingness which is there means that everything is equally available as an object of attention, equally available as a equally valid. कि फिर मेरा ध्यान इस तरफ जाए या उस तरफ जाए, it's all fine because looking for something. So when I find that and I know that I am complete, I am okay, that I don't need anything, that I'm infinite itself, then my attention can go where I want it to go. Because I'm in charge, the I now can direct attention to where it needs to go. And I have mastery over it because I'm not craving looking for something here, there, anywhere. And that mastery can allow it to go where it needs to go, come back to me, and go somewhere else and somewhere else. So while from the outside we can keep on, you know, trying to make corrections and regulations and training and this and that, to my way of thinking, this is going to the root of the whole issue. And that if we can teach our children and any adults who are into this, whatever, ADHD or whatever, then they will automatically, that is what my understanding is. And yeah, Pandey ji. मैं थोड़ा सा एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा ताकि आप उस पर और प्रकाश डाल पाएंगे शायद. Sure. यू कैन मतलब रादर और अच्छे से लाइट आप उस पर बिखरा सकें. दरअसल मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं, उनका बच्चा है ADHD से पीड़ित है. मैं काफी समय से देख रहा हूँ. या एंड ही इज 10 years old नाउ. वो बहुत पहले से है, बाय बर्थ जैसा कि बोलते हैं. तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहा है, मैंने बहुत कुछ पहले आई हैव टेकन केयर ऑफ सच चिल्ड्रन. कुछ ऐसा मुझे वो परिस्थितियां आई कि मुझे केयर करना पड़ा. तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि एक तो पहला वो है बाय बर्थ जो आपने कहा है ना, दैट इज एट DNA लेवल. और उसके बाद एक जो बाय बर्थ हुआ उसमें एक स्ट्रक्चरल पार्ट है ब्रेन का विच कैन नॉट बी डेल्ट विद. उसको तो कुछ कर नहीं पाते हैं. फिर तीसरा आता है उसमें जो बायोकेमिकल्स का है, जिसको केमिकल लोचा हम कहते हैं. वो आपस में अन्योन्याश्रित है कि बाहर जो ट्रिगर्स होते हैं उससे उस तरह का ब्रेन में हार्मोन निकलता है, वैसा बिहेवियर होता है, या हम बाहर जैसा बिहेवियर करते हैं वैसा हार्मोन निकलते हैं, या हार्मोन वैसा बाय बर्थ डिफेक्ट के कारण उस तरह का हार्मोन आ रहा है, उसकी एक्टिविटी उस तरह की हो रही है. तो वो क्या हो रहा है कि उसमें वो अटेंशन डेफिसिट जो कुछ भी बोलते हो, खैर अभी आपने एक और नया नाम दिया, वो ज्यादा रिलेट करता है. लेकिन हमने ये देखा है कि वो मतलब उस एक्टिविटी में फोकस के बजाय उसका जो सहज अटेंशन है अपने चारों तरफ की चीजों पे, जो एक अवेयरनेस ही बनी रहती है. हम लोग समाधि में भी रहते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता रहता है, या सुप्तावस्था में भी करता रहता है. वो चीज वहां कहीं कनेक्ट मिसिंग होता है उसमें. वो अब चूंकि वो बच्चे में है तो बच्चे को इस तरह के ध्यान के द्वारा थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल हो रहा है. मतलब एडल्ट में तो टैकल किया जा सकता है. तो व्हाट आई फील इज दैट जब आपकी बिटिया जब भी करेंगी, हो सकता है अगर मौका मिला तो मैं भी शामिल होऊंगा, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में मैंने इसमें देखा है और अनुभव स्वयं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है. अच्छा. उसमें बच्चों के लिए डील करने के लिए जरूरत है कि कुछ ऐसी प्रोसेसेस वो की जाए डेवलप, जिससे कि उसका एक चीज में जो फोकस रह करके जो सहज अवेयरनेस है चारों तरफ की वातावरण की, वो अवेयरनेस भी साथ साथ उसकी धीरे धीरे डेवलप हो. अभी क्या हो रहा है कि वो उसका फोकस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो अवेयर नहीं है कुछ भी. अगर उसको आपने कंप्यूटर दे दिया, मोबाइल दे दिया, कोई ड्राइंग बनाने दिया, एनी एक्टिविटी यू गिव टू हिम, ही विल बी जस्ट इमर्स्ड इन दैट एक्टिविटी, दैट्स ऑल. हो सकता है वो खाना पीना भूल जाए, हो सकता है उसका थाली बगल में खाना रखा हुआ वो नहीं खाएगा, आप कुछ बातचीत कर रहे हो वो आपके ध्यान ही नहीं दे रहा है. तो वो उस तरह की स्थिति है उसमें.
और आज करीब 6 साल से, मतलब पैदा होने के बाद तो खैर थोड़े समय बाद मालूम पड़ा कि इसको ये दिक्कत है, बट Yeah, अराउंड 5-6 years he is around 10-11 years old now and we have been looking at him, but correct. अब वो डेवलपमेंटल प्रोसेस जो भी है ब्रेन की और एक्टिविटी जो भी कराते हैं, मतलब बहुत ही मिनिमल सा असर आ रहा है, लेकिन इतना कोई बहुत वो नहीं दिख रहा वो परिणाम। नहीं देखा पा तो उसको राइट। थोड़ा सा सोचना होगा कि बड़ों के लिए तो ठीक है, जो आप मेडिटेशन और हम लोग ये जो बोलते हैं, जो हम लोगों को सीखा है, वो बड़े को फिर भी थोड़ा सा सिखाया जा सकता है, माइंडफुलनेस और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन बच्चे के साथ दिक्कत ये है कि अभी वो ये जो 3 और उसके लेयर्स हैं, डीएनए लेवल पर, ब्रेन का स्ट्रक्चरल लेवल पर, उसको अभी वो ध्यान तो आगे की बात है, उसको ये समझता ही नहीं है कि हम क्या टैकल करना चाह रहे हैं। तो राइट, मेरा इसमें ये सबमिशन है कि अब आप उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे तो समझ शायद बढ़े। श्योर श्योर। मेरे ख्याल से बच्चों को भी मेडिटेशन सिखाया जा सकता है। इट्स अ डिफरेंट टेक्निक, इट्स अ सिंपलर टेक्निक, but it can be taught. We can teach different kinds of meditation. It may not be this kind of meditation, it may be some other form, simpler, something like just counting or something like that. Or you know, वो एक जो मैं सुन रहा था, he talks about thinking of attention like a balloon. एक गुब्बारे की तरह वो होता है जो फ्लोट होते जाता है, और वो गुब्बारे पे एक लाइट भी है। तो think of your attention like a balloon and it just floats around, and wherever it lands, the light comes. So your attention goes to that. So then it goes, floats and goes somewhere else, lands somewhere else, and the attention goes to that. So, so the idea is ki we can train the child to visualize this balloon which is there in his mind, which is lighting up different areas of your mind, and slowly to gently keep on bringing the balloon back to one thing, something, whatever it is, or keep on allow, if the problem is it gets stuck one place, then give it the energy to just float up like balloons naturally do and go from one to the other. So we can devise and think of simple things like this, which a child's mind can also understand and enjoy and appreciate. And I think that would be of help. And I, even though the other layers you're talking about, see, ultimately brain, DNA, vagera vagera, these are all forms of consciousness. It is consciousness taking a particular shape, a particular form, a particular at a particular point, in a way, a particular coloration of that same consciousness. And if consciousness, if we develop the ability to be in aware of this awareness, जहां से सब कुछ शुरू हो रहा है, then we can create and change the direction of what it manifests and what it creates. So there's nothing hard and fast about even the brain and the DNA. At the end of the day, these are also simply physical manifestation of consciousness. There is no reality, there is no solidity to even these so-called things called DNA and whatever. उनकी सॉलिडिटी का भी मूल आधार है अवेयरनेस, और वो मूल आधार में जब तब्दीलियां आ सकती है, और नॉट चेंज बट मास्टरी एंड अवेयरनेस ऑफ दैट, then we can train it, or we can direct that towards whatever dream we want to dream, a dream in which the DNA is getting modified, a dream in which genes also can be changed, a dream in which the brain can heal itself, and all these kind of things are possible. So वो भी हो सकता है आगे जाकर, but शुरू में, so even at those levels we need not think that it is fixed and unchanging and we cannot do anything about. But the thing that we normally do is treat the physical with the physical. मतलब ब्रेन का कुछ है या हार्मोन्स का तो है, तो फिर हार्मोन्स की थेरेपी करो, या do all that. But we forget that the source is not that, and that has its own side effects, and who knows what else goes haywire because of all that chemical imbalance. We don't know enough about all that to really know exactly what is the way.
So it's better to go to the source again. The source is, again, is awareness, and then from that. So I think that's the possibility. So she was, वो PhD है साइकोथेरेपी में, उसे मेडिटेशन के बारे में, ठीक है डैड, ये आपका आइडिया है, बट इट डजंट वर्क इन द रियल वर्ल्ड, एंड शी इज अ साइकोथेरेपिस्ट एंड शी हैज हर, दैट्स हर करियर. उसको कहेंगे कि तुम जो कर रहे हो उससे कुछ और भी है आगे, देन अब फिलहाल तो उसके लिए वो तैयार नहीं है. या एक्चुअल में आपने जो बोला ना, मतलब दो तरीके, एक साइकेट्रिस्ट के तरीके से और दूसरा स्पिरिचुअलिटी बोले तो करेक्ट, एक्चुअल में मेडिटेशन. या स्पिरिचुअलिटी इज होलिस्टिक अप्रोच. एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली. वो उसके लिमिटेशन है, और या कोई भी ब्रेन चलाने वाला आदमी ये चीजें एक्सेप्ट करने को मुश्किल जाएगी उसको. मुश्किल है उसके लिए, वो मुश्किल है. और कोई डॉक्टर को ये मानना, वो साइंस की बात करेगा. और अभी पंडित जी ने जो बताया ना, वो उन्होंने उसकी बायोकेमिस्ट्री और उसकी एक मतलब जिसको पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं डिसीज की, वो बताया. वो और आप उसके ट्रीटमेंट पार्ट पे बोल रहे थे. करेक्ट, करेक्ट. और आपने जो बोला ना कि अटेंशन के बारे में, या अटेंशन में मतलब व्हाट इज अटेंशन, तो आपने एक्सप्लेन किया कि उसमें एक पर्टिकुलर साइड की तरफ हमारा अवेयरनेस ले जा रहा है, तो उसमें टेंशन है. या और मेडिटेशन में आपने बताया कि उसको हम सब विड्रॉ कर लेते हैं. या तो ये जब आप बता रहे थे तब मुझे समझ में आया कि इसीलिए अटेंशन में टेंशन है. करेक्ट, और करेक्ट. सब या विड्रॉ कर लिया तो वहां पे सब सूदिंग इफेक्ट है. हम हमारे देन सोर्स के पास आ गए तो सोर्स, ऐसे लगता है कि जैसे मदर के लैब में आ गए, और एग्जैक्टली, बहुत ही आराम मिलता है हमको. वहां टेंशन रिलीज हो जाता है. तो ये एग्जैक्टली. बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब इस पे सचमुच और डीप जाना चाहिए. आपने ठीक जाना आप बहुत चाहिए. कुछ दे सकते हैं. श्योर, मतलब श्योर. मैं एज ए डॉक्टर या फिर मेरा जो फील्ड है, या वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तरीके से थॉट्स मैंने नहीं सुने अब तक. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. And that's the direction we can go. So maybe we can, make um, ad- some instructions even for children who are suffering from this, and you can give it a shot, give it a try. और कि ये एक्सपेरिमेंट करना है तो स्कूल है. स्कूल है, या स्कूल है जिसमें आई एम श्योर आपके कितने बच्चे हैं उसमें? उसमें 2500. माय गुडनेस. पुरुषोत्तम जी, आप उनके लिए एक प्रोग्राम करवाइए ना हमारा. हम यहाँ 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग मिल रहे हैं हम. इसको, इस नंबर को थोड़ा बढ़ाते हैं ना. Yes. Yeah. if there are 2000 teachers, that means there must be lots of, I mean, students, that means there are a lot of teachers also. Yeah, and And more the than teachers are the sort of the catalyst and the source जहां से ये सारा fountain of knowledge flows to all these children. So वहां पे अगर आप difference create करते हैं in awareness, in their approach, then it will flow to 2000 children. How many teachers are there? more than 100, More 108. than 100. तो उनके लिए एक हम करते हैं अरेंज ओपन डोर. Yeah, I mean, one of these sessions we can invite या all of हम them. लोग उधर आते हैं. या हम उधर Yeah, आते हैं. अभी तो हम अभी दो तो तीन दिन ट्रेनिंग देते हैं उनको. करेक्ट, करेक्ट. क्योंकि अभी तो ये कोविड थोड़ा सा खत्म होने से. ऑन द वे आउट लग रहा है. तो देन वी कैन फिजिकली ऑल्सो कम देयर एंड कंडक्ट, बट Wow. एटलीस्ट ऑनलाइन वी कैन डू समथिंग. एक डेट फिक्स करते हैं, जैसे राजेश जी का जो कंपनी के लोगों थे उनके लिए हमने एक मेडिटेशन और ओपन डोर का सेशन किया था, वैसे फॉर 100 टीचर्स, एंड देन मे बी अ डिफरेंट वन, more tailored towards children we can have for, 100, or each standard we can have one, 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 one. Depending on their age we can modify. मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक भी रखते हैं टीचर्स के लिए. चलिए, 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 करते हैं. Wonderful, wonderful. I think that would be great. And invite your teachers also, whoever are little more, open to this kind of thing. Invite them to the retreat, because there's no prerequisite. ऐसा नहीं है कि आप ओपन डोर अटेंड करते हो तो ही रिट्रीट में आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. Anyone can come to the celebrating life. Yep. So great.
क्रिकेट चल रहा है 125 for 7 इंग्लैंड इन 31.5 ओवर्स. सो क्रिकेट के बारे में भी मैं बोल रहा था कि जैसे आप कह रहे हो ना, घूम फिर के वहीं आ जाएंगे, तो क्रिकेट से भी शुरू करेंगे तो हम वहीं पहुंच जाएंगे. बिकॉज एक मैं आई वाज आई स्टिल लव क्रिकेट एंड आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट in school, in college, and even in the corporate world. I used to be in the company team and all that for as an all rounder. तो बैटिंग का एक मैं मैनुअल पढ़ रहा था, एन प्रॉपर वेरी गुड ट्रेनिंग मैनुअल फॉर गुड बैटिंग. So among the first instructions in that book for how to bat well, one of the first instructions was relax. First instruction was relax. Second instruction was be still. Have you noticed a good batsman, when they are facing the ball, the stillness in their body, the body is not moving around like this, No. There's a stillness. The bowler is moving fast, but the batsman is just still. So being still, relaxing, these are the two bases of being a good batsman. And lo and behold, it is the same instruction to be a good human being. Relax, be still, relax, be still. Any image of the Buddha that you see, any statue that you see, such stillness, the one quality that you will immediately notice is the stillness about that being. So it's an inner stillness, of course. It is not that outer stillness, but the inner stillness. And the third one was watch the ball. Okay, watch the ball. It doesn't say judge the ball. Okay, it doesn't say judge the ball. It doesn't say beware of the ball. It doesn't say be careful with the ball. It just says watch the ball. Be alert. Just watching. This again sounds like an instruction of meditation. Simply watching the breath, not changing it, not being afraid of it, not modifying it, nothing, simply watching. And just like, so when you watch the ball, it's the present moment, it's coming at you. Simply watch. And the body already knows what to do, how to do. You don't need to do anything, because that already knows what to do with this. In cricket, that is your inner stillness, and this in front of you is the ball. That knows how to deal with the ball. That knows what instruction to give the body. That knows what angle, what style, what shot to select. That knows. It is not the brain. And all you do is get out of the way. And so cricket is also like life, the same instructions. Be still, relax, watch, and allow that to bring itself to this. Same instruction. and then you're a good batsman and a good. और क्रिकेट तो बहुत क्रूएल गेम है in a way, which is one of the reasons I switched from cricket to tennis. The cruelty of cricket is that one mistake and you're finished. वन मिस्टेक, बॉल हो गए, कैच आउट हो गए, रन आउट हो गए, कुछ भी एक मिस्टेक किया, गए बैक टू द पेविलियन. लाइफ इज मच मोर फॉरगिविंग. द डिवाइन इज मच मोर ओपन. चलो यार, मिस्टेक किया है, हियर इज द नेक्स्ट मोमेंट. इसमें भी चूक गए, चलो वन मोर मोमेंट. उसमें भी चूक गए, चलो ये कर लो. ये भी चूक गए, और कुछ कर लो. जिंदगी भर अगेन एंड अगेन divine forgives and gives, forgives and gives, forgives and gives. Cricket only gives once. One mistake, back to pavilion. पूरे दिन का फील्डिंग, बॉलिंग, पूरे दिन का तुम्हारा गया 1 मिनट में, और अभी जाकर सड़ो पेविलियन में फॉर द रेस्ट ऑफ द मैच. तो
So it is very unforgiving, and life is Sanjiv ji, very fun. हाँ, Sanjiv ji, I want to share you something. In my case, while playing the cricket, yeah, actually क्या है, इंस्ट्रक्शन की आप बात कर रहे हैं while yeah, playing on ground ना, अभी मेरे केस में आई एम द वेरी परफेक्ट लेग स्पिनर. ओके, अच्छा. right now I'm playing cricket Oh, here still you're on playing very Friday. good. Yeah, Okay, Friday and Saturday. The thing is, actually मैं बॉलिंग करता हूँ लेफ्ट हैंड से. ओके, तो okay, मेरा ब्रेन, अभी इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ. ओके, मैं हाँ, जब बॉलिंग करता हूँ तो आई एम रियली परफेक्ट इन लेग स्पिनर. नो, राइट right, हैंड बैट्समैन कैन नॉट प्ले विथ माय विथ बॉल. ओके, correct. सो बट अभी इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रही, थोड़ा मैं साइंस की तरफ लेके जाता हूँ. अभी लेफ्ट हैंडेड हूँ तो उसका राइट ब्रेन इज साइंटिफिकली राइट ब्रेन कैपेसिटी इज मोर देन द लेफ्ट ब्रेन कैपेसिटी. तो वो टाइम में ज्यादा एक्टिव होता हूँ जब मैं बॉलिंग करता हूँ. बट मेरा केस में क्या है, मैं बैटिंग लेफ्ट हैंड से कर ही नहीं सकता हूँ, राइट हैंड से ही करना पड़ता है मेरे को. मैं थ्रो भी नहीं कर सकता हूँ राइट हैंड से, मैं लेफ्ट हैंड से ही थ्रो कर सकता हूँ. तो मैं बैटिंग के टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूज, एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत कंफ्यूज होता हूँ मींस इंस्ट्रक्शन के टाइम. तो ये जो बैटल चलती ना लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में ऑन द फील्ड, उससे मैं थोड़ा बैटिंग साइड से डेविएट हो गया और बॉलिंग में ही फोकस ज्यादा करता हूँ क्योंकि मेरे को वो इंटरेस्ट आता है. तो ये कहीं तो भी न्यू मतलब और मेडिटेशन का इसमें एक रोल ऐसा हो गया है कि अभी मैं बॉलिंग कर रहा हूँ. ओके, तो मैंने जैसे बताया राइट और लेफ्ट ब्रेन का साइड में मेरे को बैटिंग करना बिल्कुल पसंद ही नहीं. मैं 11th प्लेयर जाके टीम में हूँ. ठीक, तो ये क्या, और बॉलिंग में फर्स्ट ओवर सेकंड ओवर एंड इन 3 ओवर में मैं बहुत विकेट्स भी लेता हूँ. correct. तो ये क्या चीज है, ये थोड़ा बॉडी से राइट लेफ्ट ब्रेन साइंस ये कैसा है, Very, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ, मैं बैटिंग अवॉइड ही करता हूँ. अच्छा, अच्छा, तो ये अच्छा. So मेरा पर्सनल. I happen to be an all-rounder, or at least when I was playing, I'm still an all-rounder. Or interesting is, I also bowl with my left hand. I bowl with my left hand, I bat right. My throw is left hand, just like yours, and I bat right. But मेरा दोनों बैलेंस है. और मैंने शायद ये कहानी बताई थी एक बार ओपन डोर में बहुत साल पहले कि आई एम अ decent bowler, decent batsman, both, even though it is left right. But the best batting I ever done, the best batting innings that I have ever had, is when I was desperate to get out and leave the ground. I think I've shared this story once. Because I was in a hurry. मेरी एक म्यूजिक का कॉन्सर्ट था और मुझे वहां पहुंचना था, तो मुझे जल्दी से आउट होके निकलना था ग्राउंड से, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी लेट हो गया था. और मैंने कैप्टन को कहा मैं 2 डाउन 3 डाउन आता हूं, लेकिन मुझे जल्दी है, अब मुझे ओपनिंग में भेज दो, क्योंकि आई हैव टू लीव. इफ यू टेल मी यू आर कमिंग 3 डाउन, आई डोंट नो व्हेन माय बैटिंग विल कम, आई जस्ट हैव टू गो. यू प्ले विद 10 प्लेयर्स बैटिंग, क्योंकि फील्डिंग हमारी हो चुकी थी. सो कैप्टन सेड ओके यू ओपन, चलो. मैं आउट होने की ट्राई, मतलब मैं वाइल्ड शॉट्स मार रहा था. ओपनिंग बॉलर हु वाज द फास्टेस्ट वेस्ट इंडियन गाय दैट अदर टीम हैड, वेस्ट यूएस में खेल रहा था, तो वेस्ट इंडीज का बॉलर था, सुपर फास्ट, एंड आई वाज हिटिंग हिम ऑल ओवर द ग्राउंड. चौके छक्के लग रहे हैं, सारी टीम देख रही है हुआ क्या है इसको आज. And it was only because my brain was not at all in the picture. My brain was not in the picture. My brain was already left. उसको तो जाना था वहीं से. So I was allowing the body to simply take over and do naturally whatever it was doing. So analysis से ज़्यादा, again the same principle of meditation applies. Get out of the way. Get out of the way and allow that to do. And that same thing applies to tennis. And the reason I switched to tennis was, कम से कम बॉल मारने को तो मिलता ही है, कुछ भी कर लो. पॉइंट मिला ना मिला, बॉल को तो ये
मारेंगे ही मारेंगे। Whereas क्रिकेट में हो सकता है पहले बॉल पे आउट हो गए, बॉल को कांटेक्ट भी नहीं किया तुम्हारा बैट ने पूरे दिन में एक बार भी। So that is the thing. So yes, left brain, right brain, all that is true, but go beyond that. Go beyond that, because ultimately it is not the left brain or right brain that is doing anything. It is as per what your consciousness, your awareness is creating in your life. According to that, left brain, right brain अपना काम करते हैं। तो उस वहां पे मत रुक जाओ। Go all the way to the being level, which is the consciousness, which is awareness, and let that come to the front, and let that allow you to play. सोचो ही मत। No thought, no thought. Just watch the ball. Just watch the ball. That's it. इनफैक्ट टेनिस में इंस्ट्रक्शन मुझे अभी अभी मैंने पढ़ी कि वॉच द स्पिन ऑफ द बॉल। डोंट जस्ट उतना उस पे लग जाओ ध्यान कि वो इस तरफ घूम रहा है कि इस तरफ घूम रहा है, उस पे तुम्हारा ध्यान रखो। और उस पे अगर ध्यान रखना है देन यू, तुम्हारी नजर उस पे से हटेगी ही नहीं जब बैटिंग कर रहे हो। व्हेन द बॉल इज कमिंग, ट्राई टू फिगर आउट विच वे इट इज स्पिनिंग इन द एयर, एंड देन द बॉडी नोज व्हाट टू डू। It already knows. उसको सोचने की जरूरत नहीं है. So try it next time you're on the field. But now all the more reason you must come to the retreat, Sharad. Cricket खेलेंगे. Yes. Wonderful. Great. So Sonal and Anamika both had questions last time. We'll take them next time because they were very similar questions actually. Sonal's question and Anamika's question. So when both are there, we'll take that on. But meantime, yes, all roads lead to Rome, as they say. या फिर हिंदी में कहना है Now तो all मियाँ, roads lead to our retreat. all roads lead to our retreat. Now all roads. All roads lead to the retreat. और तो और वो हिंदी में भी कहते हैं ना, मियाँ की दौड़ कहाँ तक, तो मस्जिद तक। तो अपनी भी वैसी ही कुछ बात है। आप फिजिक्स की बात कर लो, स्टैटिस्टिक्स की बात कर लो, साइकोलॉजी ले लो, क्रिकेट ले लो, आर्ट ले लो, जाएंगे वहीं, क्योंकि वही संजीव है, जी, मैं एक थोड़ा वही शेयर करना चाहता हूँ। या SSY में जब 4 डेज का जो रिट्रीट था ना, मेरा फर्स्ट टाइम मैंने 2012 में जो मीन्स किया था, करेक्ट तो उसमें जो उसके बाद मैंने AMC की थी 2016 में, ओके, जो श्री रामपुर में हुई थी, कई किनी जी ने ली थी। तो लास्ट डे का मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था, तो वो जो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ना, लास्ट डे, ओके, जो मंत्र चल रहा था, तो वो मोमेंट ना, मैं फिजिकली, मेरे को ऐसा लग रहा था अंदर से कि वो मोमेंट मैं छोड़ू नहीं। इतना जोर से राइट मैं, इतने 200 150 लोग थे, राइट ये लोगों में इतना जोर जोर से मैं, आई एम क्राइंग, आई वाज क्राइंग दैट टाइम, राइट इतना रोया मैं वो टाइम। और मैं करेक्ट सबको बोल रहा था, सबके पैर पकड़ के, कि ये मोमेंट मेरे लाइफ से नहीं जानी चाहिए, ये मोमेंट मेरे लाइफ से नहीं जानी चाहिए। तो वो करेक्ट देन स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग देयर ऑल द चैंटिंग mantras, and राइट so that was one of my experience in retreat, and that is what I want to, I mean, join once again. I will try, definitely. I will take care. वंडरफुल 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 या जो भी हो सो हो, देखा जाएगा। Yes. Yes. Great. Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you. I bow down to the divine which is present where you are. Thank you. Thank you. Thank you. Hari Om Tat Sat.